Good afternoon, students. I have shared the link for attendance sheet link, so all of you fill it. Okay. I have shared the link. In that link, you have to tick and submit it, isn't it? All of you submit. Okay. Only once only you have to submit, okay? बार बार उसको सबमिट नहीं करना, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद करना नहीं है, फिर आपका अटेंडेंस 0 ही आएगा, ठीक है? Okay, I'm again sending once a minute. Once again I have sent. Rutika, once again I have sent. Okay. Yes. So yesterday we have finished natural environment 2 domains. Okay, lithosphere and hydrosphere. What are the 2 domains? Actually, in the natural environment, 3 domains are there. So what are that? Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, so yesterday we have finished 2 domains, that is lithosphere and atmosphere. Okay. Lithosphere, atmosphere, sorry, hydrosphere, and the last one is atmosphere. Okay, so quickly we will revise once again whatever we have yesterday we have discussed. So lithosphere means the solid, okay, the land, the top layer of the earth, that means crust. Lithosphere means
the top layer of the earth, that means that is known as a crust, or we can say the solid portion of the earth is known as a lithosphere. So in the lithosphere it is very important, because in lithosphere only we can get rocks, minerals, okay, forest also we can see in the lithosphere. All the domains of the earth, sorry, landforms of the earth, that means mountains, plateaus, plains, valleys, hills, all this thing we can see in the lithosphere. It is present in the lithosphere. Then land for habitation, land for agriculture, then land for that means grassland is also present there. So all this thing we can find in the lithosphere only. And lithosphere, that's why lithosphere is very important. And the second one, that is the hydrosphere. Hydrosphere means all water bodies on the earth. Hydrosphere means what? All water bodies on the earth. So hydrosphere is also the domain of water, that is the hydrosphere, and it comprises various sources of water and different types of water bodies, that is river, ocean, seas, lakes, ponds, all these things. And it is very essential for all living organisms. Hydrosphere is very essential for all living organisms. Then hydrosphere, it is also, we can say hydrosphere is very important because water support life in many ways. Okay, water support life in many ways. Okay. Then it is used for, we know that it is used for drinking, cleaning, okay, bathing, for different purpose. Daily we need water for our day-to-day activity. Then it helps in generating electricity, okay, and power. Water is also helpful for generating electricity and power, okay. Then water is also used for industrial purpose. Water is also useful for industrial purpose, okay. Like we can say production, we can say manufacturing, then cooling the tower. For all this purpose water is useful, okay. Then farmer use water for various agriculture practices. In the lithosphere, what we have seen, land जो है वो हमको कौन दे, लैंड में हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं. बट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, उसके लिए क्या जरूरी है, वाटर. वो हमको कहां से मिलेगा, वाटर बॉडीज से. सो दैट्स व्हाई farmers use water for various agriculture practices, okay. Then water navigation helps boost trade and commerce, okay. Trade and commerce, trade and commerce means जो sailors जो होते हैं, ships जो होते हैं, जिसमें सामान जो है एक जगह से दूसरे एक्सपोर्ट करते हैं जब सामान शिप में, तो वो भी जो ट्रेड के लिए भी वाटर जो है नेविगेशन वो बहुत हेल्प. जैसे हम लोग हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं ना, हाई टाइड में मोस्टली जो शिप्स जो है वो बहुत इजीली आगे जा सकते हैं, क्योंकि हाई टाइड होता है तो वेव से शिप जो है आगे मूव कर सकते हैं इजीली. Then ocean provides us with food and minerals. Ocean. And the last one is water bodies moderate the climate of a place, okay. So all these things, the hydrosphere, that's why hydrosphere is also very important. We have already discussed that lithosphere is also very important for all living organisms. Similarly, hydrosphere is also very essential for all living organisms, okay. And now today we will discuss about atmosphere, okay. These two yesterday only we have finished. Just quickly we revise. Now today what? Atmosphere. Now this is another domain of the
Earth. Atmosphere means the air blanket around us. Air. अब एयर पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. सपोज टेक दिस इज, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है. अब इस अर्थ को चारों ओर से क्या है, कवर करके क्या रखा है, एयर. एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ एयर पार्टिकल्स. पूरे ये एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ ब्लैंकेट. इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस. ठीक है, ये हमको पूरा कवर करके रखा है. ठीक है. So the layer of air surrounding the atmosphere. That means the layer of air surrounding the atmosphere is known as, or we can say layer of air surrounding the earth is known as atmosphere. Okay. Then the gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. अब अर्थ जो है उसको चारों ओर से एयर ने कवर करके रखा. अगर कवर करके रखा है एयर ने तो वो तो हवा में उड़ जाएगा. ऐसा है क्या? होल्ड मतलब पेंडुलम की तरह वो मूव कर रहा होगा? नहीं. क्यों नहीं करता होगा? बिकॉज क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है उनको होल्ड करके रखा है. एयर पार्टिकल्स को जो है होल्ड करके रखा है. ठीक है. इसीलिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर. इसलिए हम देखते हैं कि ये जो एयर हम बोल रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर वी कैन से, बट ये अर्थ को मूव करने नहीं दे रहे. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, होल्ड करके एयर पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा है. ओके, क्लियर. नाउ it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. अब ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये पूरा जो है that is covered by atmosphere, a layer, a blanket of air we can say. ठीक है. अब ये जो सन रेज है, this is sun rays, जो उसके जो हीट है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है अर्थ में नहीं पहुंच रहा है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों ओर से क्या कवर है, मिक्सचर ऑफ एयर. वहां पर जो है एयर जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा है. तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज. सो ओजोन लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, या हीट जो है, स्कॉचिंग हीट जो है सन का, वो डायरेक्टली जो है अर्थ पे नहीं आ, क्योंकि उसके पहले एटमॉस्फेयर जो है वो चारों ओर से कवर करके रखा है. इट कवर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. ठीक है, बिकॉज आई एम ऑलवेज सेइंग दैट मिक्सचर ऑफ air. ठीक है, mixture of air. So that mixture of air means, or mixture of gases we can say, mixture of gases. So इसमें कौन कौन से gases present है? Like oxygen, nitrogen, okay, then carbon dioxide, water vapor, dust particles. That's why we can say a mixture of gases. इसलिए हम बोलते हैं कि mixture of gases. ये जो अर्थ को कवर करके रखा है एटमॉस्फेयर, वो उसमें क्या क्या mixture of gases is present. Okay. So oxygen, nitrogen, carbon dioxide, then it also contain dust and water vapor. ठीक है. Then change in atmosphere is equal to change in weather and climate. Change in atmosphere
is equal to changing weather, climate. Now change in atmosphere is equal to change in weather and climate. Now weather and climate कैसे? अगर change in atmosphere में अगर कोई changes आता है तो वही उसमें भी weather और climate में भी changes हमको देखने को मिलते हैं. Take the example of summer season. अब समर सीजन में आप बाहर जाओगे तो आपको कैसे फील करोगे? हॉट है ना, क्योंकि सनरेज जो है डायरेक्टली हमारे इस पे फॉल हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हमको सनरेज मिल रहा है. तो एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली वेदर और क्लाइमेट क्या हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई, बहुत ज्यादा हीट रहेगा. जस्ट ऑपोजिट अगर हम विंटर सीजन का बात करें, विंटर सीजन व्हाट वी विल से, तो सनरेज जो है उतना डायरेक्टली फॉल नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट जो है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है. कूल, वी कैन फील कूल, ठंडी रहता है. सो दैट्स व्हाई वॉइस इज लो. Automatically beta after 2-3 minutes you will say automatically, ma'am, your suddenly your voice become low. Beta wait 2 to 3 minutes, you wait, है ना. Maybe your side problem, that is network problem. यहाँ तो कोई problem नहीं है. Okay, so change in atmosphere is equal to change in weather, climate. Okay, so two example I have given. One is the summer season, another one is the winter season. Okay, and it is audible. Yes. Okay, so now nitrogen, we know that nitrogen is the most abundant gas. Percentage wise if we will see 78%. ओके, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है नाइट्रोजन का? 78%. ठीक है. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर हम देखें कौन सा गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. ओके, 78%. सेकेंड, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, दैट इज 21%. ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? 21%. Okay, and the next one is, that is carbon dioxide. If we will see, that is remaining 1% is made up of carbon dioxide, hydrogen, argon, helium and other noble gases. Means because गैस जो है वो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस बहुत सारे, बट सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है. रिमेनिंग 1% उसमें सब चीज, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा आपका, देन आर्गन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, सारे गैस मिक्सचर वो सब रिमेनिंग वो 1% में प्रेजेंट है. बट सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे मोर, दैट इज 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. ओके, then the atmosphere is an important domain of the earth. The oxygen present in the atmosphere helps, we know that for living beings what we need? Oxygen. ठीक है, so oxygen present in the atmosphere helps living beings or survival. For survival, which gas we need? Oxygen. Okay, and carbon dioxide is used by plants to make their food. Okay, oxygen living organism using, means ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट यूज करते हैं किसके लिए? अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए. ओके, आपने फोटोसिंथेसिस साइंस में पढ़े होंगे ना, फोटोसिंथेसिस, उसमें पूरा क्लियरली डायग्राम के साइड उसमें 5th स्टैंडर्ड में दिया है, 4th में भी दिया हुआ है, and I think in 6th standard also we are learn about the photosynthesis, process of photosynthesis. The atmosphere blocks the harmful rays of the sun from reaching that. This I already explained that किस तरह से atmosphere
एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. Harmful rays, that means ozone layer. Now one thing I want to ask you, see, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, all the three domains, the natural environment का three domains जो है lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Now you tell me, if only lithosphere is present, then life is possible? No, life is not possible. सिर्फ लैंड अगर होगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि सिर्फ लैंड से हम क्या करेंगे, लैंड से तो सिर्फ रह सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है. इफ ओनली हाइड्रोस्फीयर इफ इट इज देयर, देन ओनली वाटर बॉडीज में आप कितने दिन बच सकते हो, वाटर बॉडीज फूड कहां से आपको मिलेगा. सो दैट मीन्स वाटर बॉडीज सिर्फ हाइड्रोस्फीयर से भी पॉसिबल नहीं है. ओनली एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स एयर, सिर्फ एयर ही अगर अर्थ में है तो भी लिविंग बीइंग पॉसिबल नहीं है. So for living beings, all the three domains are very very important. ये तीनों domains जो है वो living beings के लिए, living organisms के लिए ये जरूरी है. So the fourth one, that is biosphere. So biosphere, now we will discuss about the biosphere. ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, biosphere. So biosphere means what? It is a narrow zone. Okay, biosphere means it is a narrow zone of the earth where land, water and atmosphere interact with each other to support life. ठीक है, biosphere means what? That means the land, okay, a narrow zone of the earth where land, water and atmosphere interact with each other for to support the life. Means बायोस्फीयर वो जगह है जहां पर लैंड भी है, वाटर भी है और एटमॉस्फेयर भी है. तभी एंड बायोस्फीयर में ही लाइफ जो ह्यूमन बींग्स जो है वो लीव, ह्यूमन बींग्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लीव कर सकते. That is only known as a biosphere. So that means in details, if we will see a definition, a narrow zone of the earth where land, water and atmosphere interact is called biosphere. It is also called the living world. Biosphere is also known as the living world. Okay, biosphere को living world भी बोलते हैं. Why? Because consist of plants and animals kingdom. वहां पर क्या है, living world and consist of plant and animals kingdom. It is the zone where all living beings interact with each other to support life on the earth. Okay, to support life on the earth. So here we finish our the natural environment. All the three domains of the natural environment. यहाँ पर हमने तीनों domains जो है natural environment के हम लोग finish. Now next environment, that is human environment and ecosystem. Okay, next is first we will discuss the ecosystem and then human environment. Okay, so now I am giving you one question that you have to find out the answer. Okay, so all of you write down this question. Why is oxygen a basic need for all living beings? Now note down the question, all of you, and try to find out the answer, and on Monday we will discuss this answer. Okay, why is oxygen a basic need for all living beings? Or otherwise I am writing on the blackboard. This is your homework also. Okay,
Y is oxygen, a basic need for all living, for all living beings. Okay, this is the one question. And the second question is, what are what are abiotic abiotic elements made of abiotic elements, and third one is why is why is the lithosphere important to us. Okay, now three questions I have given you homework, so you try to find out the answer, and on Monday we will discuss. First is why is oxygen a basic need for all living beings. Second one is what are the abiotic elements made up of, and why is the lithosphere important to us. Okay. Okay. So thank you all of you, and one day we will discuss. Okay, and ecosystem. Next topic is our ecosystem.